वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल। और आज हम स्पेशल सेशन ले रहे हैं आइल्स स्पीकिंग टास्क 1, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, उसके बारे में। लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स, आपको ये इश्यू हो रहा है कि पहले थोड़े बहुत लाइक पर्सनल क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर जनरल क्वेश्चन हो गया, फिर ये हो गया। तो रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ लाइक जी एग्जामिनर के जो क्वेश्चन है उसके फेवर में, उसके रिस्पॉन्स में हम कैसे बोले, कैसे आंसर दे, किस तरीके से आंसर दे। तो वो आंसर की बात तो सेकेंडरी है। आई वुड से हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं कन्वर्जेशन में, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आप पहले क्वेश्चन का टाइप क्या है वो समझिए। तो उसके लिए आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से अंत तक, लाइक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यू मस्ट वॉच द वीडियो। आप देखिए, मैंने यहाँ पे खास लाइक नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो सारे टॉपिक को निकाल के मैंने मेजर 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। लाइक जो मेन 5 डिवीजन है क्वेश्चंस के, तो वो कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसे रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है। So without wasting time, let's move to the further, and I will go you, or I will going to describe those 5 types of or 5 variety types of questions and how to respond them. और स्पेशली अब तक आपने हमारी चैनल आर इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और फर्स्ट टाइप ऑफ लाइक आई वुड से द ग्रुप मैंने अभी जो डिसाइड किया उनमें से पहला है दैट इज द डायरेक्ट आंसर, इन डिटेल आंसर। ओके, तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनर जो है लाइक मोस्टली पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो भी है, आपका पर्सनल क्वेश्चन, पर्सनल डिटेल आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसमें। क्वेश्चन ये हो गया आपके, आप देखते हैं तो लाइक पहला क्वेश्चन हो गया लाइक वेयर डू यू लिव। ये जो टाइप का क्वेश्चन है दैट इज द स्ट्रेट क्वेश्चन। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर देना है। यहाँ आपको कोई आपका पर्सनल ओपिनियन या कुछ नहीं, इट इज डिटेल्ड that you have to provide a detail or information for those, like those questions as considered as an informative question as well. So अगर एक question है where do you live, so you can start with well I live in a Surat। फिर आप थोड़ा पोज लीजिए, डू नॉट स्टार्ट स्ट्रेट अवे, क्योंकि मेजोरिटी मैंने एक देखा है कि बच्चे क्या है कि लाइक इंटोनेशन जो है, मींस के उसके प्रोनाउंसिएशन है, उसके ऊपर फोकस नहीं करते, पोजिस नहीं लेते। पोजिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यू शुड स्टार्ट इन दैट वे। वेल आई लिव इन ए सूरत विच इज फेमस फॉर। ओके, सूरत और उसको मैंने कनेक्ट किया विच से, आई लिव इन ए सूरत सिटी और आई लिव इन ए सिटी ऑफ सूरत विच इज वन ऑफ द मेजर सिटी इन गुजरात स्टेट। तो उसका मैंने क्या कर दिया, लाइक इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन है। So well, I live in a Surat, which is one of the most famous city in Gujarat state. It is also famous for its 2 major industries. First is textile and another is a diamond. तो यहाँ पे हो गया, it is known for 2 famous industries, the first and the second. तो ऐसे आपको जब भी कोई नाउन यूज करने का चांसेस मिले, आप लाइक नंबर ऑफ नाउन यूज कर रहे हो, तो वो टाइम पे ध्यान रखिए कि आप कोहेजिव डिवाइसेस मींस लिंकर्स यूज कर सकते हो। बाकी स्पीकिंग में लिंकर्स यूज करना लाइक तो थोड़ा बहुत हार्डली रहता है। सो वेल आई लिव इन ए सूरत विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन गुजरात स्टेट। इट इज फेमस फॉर 2 major industries. The first one is a textile and the second one is a diamond. And geographically, it is located on the river bank of Tapi. It has a lot of attraction such as a Dumas Beach, the variety of parks, as well as amusement park and museums. तो आप ऐसे आंसर दोगे तो क्या, it is a kind of informative। जो एग्जामिनर है आपके पास क्या है कि इंफॉर्मेशन आप कैसे उसे शेयर करते हो, वो आपकी स्किल देख रहे हैं। तो व्हेन यू गेट सच क्वेश्चंस लाइक वेयर डू यू लिव, सो आई बिलोंग टू, आप वहां से भी शुरू कर देते हो, आई बिलोंग टू अ सिटी ऑफ सूरत, और वेल आई लिव इन अ सिटी ऑफ सूरत विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन गुजरात स्टेट। The city is known, or the city is famous for its 2 various or 2 big industries. The first one is textile industry and the second one is a diamond manufacturing. Additionally, फिर यहाँ से अभी आपको और कुछ डालना है, तो एडिशनली हम कर सकते हैं कि एडिशनली
or geographically it is located on the riverbank of Tapi. Moreover, the city has lot of attractions. Like हम क्या करते हैं, मेजोरिटी ये होता है कि the city has A, B, C, D, E, like it is having so many beaches, parks, amusement park and so and so. तो उसे क्या होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दे. इट इज नॉट अ क्वेश्चन एंड आंसर लाइक वी यूज्ड टू हैव इन आवर एकेडमिक ईयर्स, लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन में हम जो आंसर देते हैं, ऐसे नहीं है. यहाँ पे द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज बीइंग असेस्ड. आप कैसे कोई भी आंसर को प्रेजेंट करते हो वो इंपॉर्टेंट है. तो जो भी लाइक आप बोल रहे हो, लाइक इट हैज लॉट ऑफ अट्रैक्शन द सिटी, लाइक मोर ओवर, एडिशनली, फर्दर मोर, लिंक डालिए. Moreover, it has lot of attraction. The first one is one of the most famous Dumas beach. Additionally, moreover करके भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, like the first, like lot of beaches, amusement park, gardens as well as relaxation places. तो आप ऐसे आंसर दीजिए. सेकंड क्वेश्चन कुड बी, अगर आपको पूछ सकते हैं कि लाइक डू यू लाइक कुकिंग. ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. आपको क्या है कि आपकी पर्सनल स्किल जो है वो आप यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करनी है. सो लाइक डू यू लाइक कुकिंग. ओ यस, ऑब्वियसली, ओके, सर्टेनली. आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना, आपका जो आई वुड से जो आपका पर्सनल फीलिंग है, थोड़ी बहुत फीलिंग स्टार्टिंग में डालिए. यस, नो, ने. डू यू लाइक कुकिंग. यस, आई लाइक कुकिंग. नो, आई डोंट लाइक कुकिंग. डोंट गो इन दैट वे. आई वुड एडवाइज आप थोड़े बहुत क्या कि पर्सनल इमोशंस ऐड कीजिए. ओ यस, ऑब्वियसली, व्हेन यू गेट सच क्वेश्चंस, आपको लाइक आपको स्किल अच्छी लग रही है. डू यू लाइक कुकिंग. ओ यस, ऑब्वियसली. थोड़े आपको आपके एक्सप्रेशन से, फीलिंग से, आपके फेस पे, आपके बॉडी जो है, आपका लैंग्वेज जो दिखाइए. डू नॉट स्टेट अवे लाइक yes, of course, I like cooking. Cooking is one of my passion, and while cooking, I feel relaxed and I enjoy the activity a lot. Don't go in that way. You should say rather like going in a flat tone, going without moving your face or hand. I would say, oh yes, if it is a question for me, like do you like cooking. Oh yes, obviously, cooking is one of my passion, and additionally it is my hobby. Whenever I cook, I feel relaxed and over cloud nine. तो यहाँ पे क्या किया मैंने, रिलैक्स एंड ओवर क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी. इडियम है, इडियोमेटिक लैंग्वेज इज नेसेसरी इन स्पीकिंग पार्ट. तो जहां भी पॉसिबल हो आप इडियम्स डालिए थ्रू आउट योर थ्री ऑफ द सेक्शन, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन सेक्शन, द क्यू कार्ड एंड द फॉलोअप क्वेश्चंस. कहीं पे भी अगर आपको पॉसिबल लगे तो 2-5 जो इडियम से आप यूज कीजिए. सो वुड द आंसर वुड बी ओ यस, ऑब्वियसली. आप ऐसे आप पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं. अगेन लाइक डू यू लाइक कुकिंग. ओ यस, ऑब्वियसली, cooking is one of my passion, and whenever I cook my favorite type of dishes, I feel extremely happy as well as I feel rejuvenated. Happy, rejuvenated, or whenever I cook, I feel happy as well as over cloud nine. अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू डालने के बाद आप बोलिए यहाँ पे एक एग्जांपल डाल दीजिए. लाइक फॉर एग्जांपल और फॉर इंस्टेंस, आप कोई भी लाइक टू एक्सप्लेन इट, टू एलोबरेट, आप जो राइटिंग में यूज करते हो वही वर्ड्स यहाँ आप यूज कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग लास्ट संडे आई ट्राई टू मेक अ पिज्जा and it was too much delicious and mouth watering. Either delicious, tasty, finger licking, mouth watering, आप ऐसे verbs जो है use कीजिए. Okay, so for example, last Sunday I tried making or I tried to make. ये जो वर्ब है यहाँ पे वर्ब का भी आप थोड़ा बहुत ध्यान देखिए. वेराइटी ऑफ वोकेबलरी, नहीं कि आप लाइक पिज्जा का कोई दूसरा नाउन लेके आइए. My point is we have to use variety of vocabulary, noun, verb, adverb, adjectives, participle, gerund. में अभी अपने सारे वीडियो में कहता रहता हूँ. That is the vocabulary that IELTS is demanding, not like kind of only fancy vocabulary. Okay. So during last Sunday, for example, during last Sunday, I tried to make or I tried making a pizza, and it was so delicious that my parents as well as my friends appreciated me a lot. तो ये था हमारा जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है. डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पर्सनली पूछेंगे तो आप अपना पर्सनल थोड़ा बहुत डालिए. अगर ऐसा लगे कि आंसर आपका शॉर्ट है तो आप कुछ लाइक पास्ट एक्सपीरियंस या फिर आपको एग्जांपल डाल दीजिए. ऐसे आप करेंगे, आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड ग्रेड, एंड आप एक एक्सटेंडेड आंसर भी डाल सकते हैं.
The second type of question, or I would say the response or answer, would be opinion based answer, like opinion based or we can say reflective. यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू थिंक, इन योर ओपिनियन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, डू यू लाइक ए और बी, व्हाट इज योर फेवरेट समथिंग, व्हाट डू यू थिंक। तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वहां पे आप क्या करोगे, दोनों पार्ट लीजिए। व्हाट आई वुड से, लाइक आपको अगर पूछा जाए कि डू यू लाइक इंडोर एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी, तो ऐसे जो क्वेश्चन है आप बोलिए कि आपको इंडोर पसंद है, इन सम केसेस आउटडोर पसंद है, इन सम केसेस इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन वेदर, इट डिपेंड्स ऑन माय मूड। आप ऐसे आंसर जो है आप शुरू कर सकते हो। मान लो कि एक क्वेश्चन है, हम यहाँ लेते हैं फॉर एग्जांपल, डू यू प्रीफर लिविंग इन अ सिटी और कंट्री साइड। आप कहाँ पे रहना पसंद करोगे, वेयर डू यू प्रीफर टू लिव, आइदर इन सिटी और इन कंट्री साइड, वेयर यू आर प्रीफरिंग। तो यहाँ पे आप आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल सकते हो, लाइक इन माय ओपिनियन, आई थिंक, आई बिलीव, आई वुड लव टू, ऐसे शुरू कर सकते हो। ओके, सो दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि वुड यू लाइक टू लिव इन ए सिटी और इन ए कंट्री साइड। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप अगर एक्सेप्ट करो कि नहीं अभी तो रह रहा हूं मैं सिटी में, लेकिन मुझे गांव में रहना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो, जो आपका एक्सप्रेशन है, फीलिंग हो डाल सकते हो आप, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड लव टू लिव इन ए विलेजेस, क्योंकि यहाँ पैराफ्रेज भी करना है, कंट्री साइड इज अ विलेज। So like honestly speaking, I would love to live in my village. Like जो कंट्री साइड है, विलेज, विलेज को भी हम कर सकते हैं, पर्सनल पॉइंट पे ला सकते हैं, माई विलेज। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड लव टू लिव इन माई विलेज, बिकॉज से आप वहां रहना क्यों पसंद करोगे, तो वहां लिखे बिकॉज द लाइफ इन अ विलेज इज मोस्ट सिंपल, द लाइफ इन अ विलेज इज मोस्ट सिंपल, वेयर आई कैन हैव द फ्रेश एयर, even the most organic food through which I can keep my body fit as fiddle। ये फ्रेज है, ये हम डाल सकते हैं। Honestly speaking, I would love to live, I would love to live, or I always prefer living in my own village, because the village is full of natural beauty and natural attraction. It has a lot of ponds, rivers, as well as a lot of animals are there। I can experience the most natural life over there। Moreover, ज्यादा हम बोल सकते हैं like moreover or additionally or furthermore। Moreover, I can have or I may have the most organic food and through which I can keep my body fit as fiddle। फिट एज फिडल जो है लाइक एक यहाँ पे इडियोमेटिक लैंग्वेज है, वो आप यूज करेंगे तो क्या है उसके उसे लाइक लैंग्वेज में जो वोकेबलरी उसका स्कोर बढ़ेगा। सो आई कैन कीप माय बॉडी फिट एज फिडल, ये एक तरीका हुआ। दूसरा अगर आप बोल सकते हो लाइक कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग और आई विश। आपको पूछा गया है कि गांव में रहना पसंद है या सिटी में, वेयर डू यू प्रीफर टू लिव, आइदर इन योर कंट्री साइड और इन सिटी। आई विश आई कुड लिव इन अ विलेज। हाँ, मैं लाइक आई विश मैं शायद रह पाता, बट अभी मुझे सो एंड सो रीजन की वजह से सिटी में रहना पड़ता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई विश आई कुड लिव इन I could live in my own village। However, due to my father's business and my academic progression, and I'm pursuing my bachelor in computer application as of now, so I am forced, or I have no choice, rather living in a city। I'm living in a Surat city where I can get a lot of most advanced amenities, modern facilities, as well as education and medical aid। On the other hand, villages are pure and natural, but a financial progression as well as a career related progression is not possible। So not only financial but also career related progression is not possible in my village, and because of those reasons I am forced to live in metro area। तो आप जो लाइक ओपिनियन बेस्ड आंसर है, यहाँ आप अपना ओपिनियन भी डाल सकते हो। लेट्स टेक द अनदर सैंपल ऑफ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है लाइक डू यू थिंक एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। तो आपको यहाँ के सीधा आपको ही ओपिनियन पूछा जा रहा है, दे आर द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट योर ओन ओपिनियन, डू यू थिंक एक्सरसाइज इज गुड और एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई परसेप्शन, और इट इज जेन्युइनली। हम बोले तो लाइक एक्सरसाइज तो सभी के लिए अच्छी है, तो वी कैन यहाँ कह सकते हैं लाइक ओ यस विदाउट डाउट। ओके, आप ऐसे शुरू कर सकते हो लाइक डू यू थिंक एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, ओ यस, और ओ विदाउट डाउट, और सर्टेनली और ऑब्वियसली। आप ऐसे जो पर्सनल एक्सप्रेशन यहाँ डाल सकते हो, ओ यस, विदाउट डाउट और सर्टेनली, ऑब्वियसली,
exercise is considering as the one of the strongest tool to keep human body fit as fiddle. यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट दिखा दिया कि एक्सरसाइज इज बीइंग कंसीडर्ड एज, पैसिव डाल दिया, इज बीइंग कंसीडर्ड क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बहुत ऐसे रेयर केसेस, रेयर चांसेस हमें मिलेंगे कि वहां हम पैसिव डाल सकते हैं, वहां हम इडियोमेटिक लैंग्वेज डाल सकते हैं, वैरायटी ऑफ वोकैब कर सकते हैं. सो आई वुड से फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, और आई वुड से फिजिकल एक्टिविटी, और आपको अगर एक्सरसाइज ही यूज करना है तो रेगुलर एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज के सामने हम क्या डालेंगे, आगे एडजेक्टिव डाल देंगे. सो ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, सर्टेनली, और no doubt exercise or regular exercise is being considered as the one of the most strongest tool or one of the most important activity for human to keep the body fit as fiddle. And for that reason, और उसी की वजह से, अभी यहाँ पे क्या ओपिनियन पूछा है तो आप अपने पर्सनल पे ले लीजिए. एंड फॉर दैट रीजन in every morning I wake up early at about 6, and I perform a variety kind of physical activities, such as first I do yoga, and then I go to the gym, and after completing my dinner I go for a walking. तो आप पर्सनल भी ले सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज का क्या है, तो आप ये लाइक while performing exercise उसके बेनिफिट भी दिखा सकते हैं. Like performing exercise helps in various ways. First of all, it helps to improve blood circulation. Additionally, while doing regular physical activity, it keeps our bones as well as muscles stronger. It also helps to improve digestion, and additionally, or moreover, or last but not the least, it is helping to improve brain memory. तो यहाँ पे जो like benefits है, like conducting physical activity or exercise, there are number of benefits. तो उनमें से आप 2 या 3 दिखा सकते हो. तो दैट इज आई वुड से लाइक ओपिनियन बेस्ड और रिफ्लेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो जैसे ही आपको ऐसे पूछा जाए लाइक डू यू से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो आइदर उसे आप जनरल से पर्सनल ले लीजिए, या फिर पर्सनल से जनरल पे ले जाए, तो एक लेंथ ऑफ आंसर बनेगा और एग्जामिनर विल गेट सेटिस्फाई. और खास याद रखिए, बच्चों को हम बोलते हैं कि पहले आप आइडिया दीजिए, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल डालिए, तो क्या है कि आंसर की एक लेंथ ज्यादा बना देते तो बहुत ज्यादा नहीं बनानी, बिकॉज दिस इज पार्ट 1, टास्क 1. यहाँ पे एडिक्वेट 4, 5 अप टू 7 लाइन, 7 सेंटेंसेस वुड बी मोर देन इनफ. वरना क्या होगा, एग्जामिनर आपको स्टॉप करवा देगा. दे विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक मोर. बट एक कंडीशन में आप उसे नेगेटिव नहीं लोगे, वो अगर आपको रोकता है, जस्ट स्टॉप स्पीकिंग इंस्टेंटली, और आपको दूसरे क्वेश्चन पे मूव हो जाए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर मेथड. ओके, द थर्ड टाइप ऑफ आंसर, और आई वुड से क्वेश्चन, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव आंसर. लाइक वहां पे आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है. ओके, आपको पूछा जाए ए एंड बी, आप सी पे भी जा सकते हो. Okay, let's understand with the help of like example. Question है, what kind of weather do you like? आपको कैसा वेदर पसंद है? So well, honestly speaking, all of the 3 season. Well, I live in India. आप शुरू कर सकते हो कहाँ, आपकी geographical condition, what sort of weather condition that we are experiencing or you are experiencing, और उनमें से कौन सा बेस्ट आपको पसंद है और क्यों पसंद है. वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन देना है. आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, ये नहीं ये पसंद है, ये नहीं ये पसंद है, ए और बी. आई वुड रादर प्रीफर, जब आपको क्या है कि 2 में से एक चॉइस लेनी, तो कंपैरेटिव डिग्री डालना है कि पर्सनली आई प्रीफर पॉइंट ए रादर देन पॉइंट बी, और कंपेयर टू ए आई प्रीफर पॉइंट बी. आप ऐसे लाइक कंपेरेटिव डिग्री डालिए, क्योंकि ये जो लाइक आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर है, कॉन्ट्राडिक्ट करना है, 2 चॉइस दी रही है, तो यहाँ पे आप डिग्रीज का इस्तेमाल कीजिए. उसकी वजह से लाइक वेराइटी ऑफ रेंज ऑफ ग्रामर जो है वो क्लियर होगी, एंड वी विल गेट अ गुड स्कोर. तो क्वेश्चन जो था हमारा लाइक व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू यू लाइक, और व्हाट काइंड ऑफ वेदर डू यू प्रीफर. सो यू कैन स्टार्ट विथ वेल, वेयर आई लिव इन इंडिया, और वेयर आई लिव इन इंडिया, the country is, or I am experiencing, I am facing, or I am experiencing. Okay, मुझे like एहसास हो रहा है, like I am experiencing 3 seasons. The first is winter, the second is monsoon, and third one is a kind of hot sunny days. Okay,
सो विंटर, हमें यहाँ पे इंडिया पे 3 सीजन है, हमने यहाँ बता दिया। और लाइक इन इंडिया आई एक्सपीरियंस 3 सीजन। लाइक हो सकता है कभी भी आपको लाइक 3 नाउन्स कंटिन्यूअसली आप याद ना भी आए। तो well, I live in India where I experience 3 different kind of season. Among them, my favorite one is winter. आपको यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत ब्लफ खेलना है। जब भी हमें लाइक नंबर ऑफ नाउन्स का क्वेश्चन आता है तो इट इज ऑब्वियसली, बच्चों के साथ ये होता है, हमारे मेरे साथ भी होता है समटाइम, कि जब कोई क्वेश्चन इंस्टेंटली सडनली आ जाता है तो हमारे पास लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव आंसर नहीं भी होता है, तो उसे क्या जनरलाइज कर दीजिए कि वेल इन इंडिया आई एक्सपीरियंस 3 काइंड ऑफ सीजन, अमोंग देम आई लव विंटर। विंटर, मॉनसून, जो भी है हमारी 3 सीजन है, अगर हमें याद नहीं आ रही तो जस्ट लेट इट गो, डोंट वरी। यहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं है कि आपको 3 सीजन पूछिए तो आपको तीनों के परफेक्ट एक्यूरेट नाउन देना ही है, नहीं। इट इज अ डिस्क्रिप्शन। ओके, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर यहाँ पे देना है। सो इन इंडिया आई मोस्टली एक्सपीरियंस 3 सीजन और 3 डिफरेंट सीजन्स। Among them, my favorite one is winter because during the season I feel chilled and cold wind, and during the colder days or chilling days, I can have my digestion improved easily. I can consume as much as possible because I'm a foodie person. मुझे बहुत खाना पसंद है, तो विंटर में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन I can consume as much or as much variety of dishes as I can, and I'm a foodie person because of that, so and so. और लास्ट में आपको अगर बोलना है, however we cannot avoid the importance of other seasons. Okay, पहले बोल दीजिए कि well I live in India where I experience three types of different season, and among them winter is my famous, or winter is one of my favorite season, or winter is one of my favorite बिकॉज और ड्यू टू। आप यहाँ से क्या कि वो आपकी फेवरेट है तो क्यों है, आप यहाँ एक्सप्लेन कीजिए कि बिकॉज ड्यूरिंग विंटर आई कैन कंज्यूम नंबर ऑफ डिशेस इजीली एंड माय डाइजेशन improves significantly. However, we cannot avoid the importance of other 2 seasons or rest 2 seasons. तो ऐसे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्टिव दूसरा अगर हम क्वेश्चन हो सकता है लाइक डू यू लाइक रीडिंग और राइटिंग, यह सीधा क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। यू मे हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक रीडिंग, और यहाँ पे ऑप्शनल भी हो सकता है, तो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, रीडिंग और राइटिंग, डांसिंग और सिंगिंग। 2 एक्टिविटी आपको साथ में दी जाती है, तो उनमें से आपको आइदर एक सिलेक्ट करना है या फिर 2 करना है। 2 अगर आप सिलेक्ट कर लो, लाइक अगर आपको पूछा है कि डू यू लाइक राइटिंग और रीडिंग, आई प्रीफर बोथ राइटिंग एज वेल एज रीडिंग। ओके, यहाँ से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से शुरू करना है। अगर आपको 2 नाउन दिए गए हैं वो कंडीशन में कि ऑनेस्टली आई प्रीफर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग। यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम पूछे लाइक डू यू लाइक रीडिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव रीडिंग। रीडिंग इज कंसिडर्ड एज, अब रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे दे सकते। पर्सनल आपने बोल दिया यस और नो, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली रीडिंग इज वन ऑफ माय पैशन, रीडिंग इज वन ऑफ माय हॉबी, आई लव टू रीड वैरायटी ऑफ बुक्स। आप कोई भी शुरुआत आपका पर्सनल कीजिए एंड देन गो फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। रीडिंग आई बिलीव और इन माय परसेप्शन आई बिलीव और इट इज वेल सेड, इट इज लाइक सेड बाय मेनी पीपल। आप कैसे भी शुरू कर सकते हो, लाइक आई बिलीव रीडिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटी थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव आवर इंटेलेक्चुअल इमोशनल क्वालिटी इजीली, और रीडिंग इज कंसिडर्ड एज द फूड फॉर द ब्रेन। रीडिंग का इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाया कि ऑब्वियसली ऑफ कोर्स रीडिंग इज वन ऑफ माय पैशन एंड आई बिलीव रीडिंग इज कंसिडर्ड एज अ फूड फॉर द ब्रेन। I mostly prefer reading books based on information technology, robotics, and innovation. Recently, I read a book written by Elon Musk based on the research and innovation on automation and robotics technology. It was a wonderful output, and while reading a book and after completing the book, I found that my knowledge and information enriched a lot. तो एक एग्जाम्पल भी डाल दीजिए, that would be the perfect explanation or that would be the perfect answer. Once again I would say, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए इन 2 ऑप्शंस, यहाँ तक सिर्फ रीडिंग है, और यहाँ पे अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि डू यू लाइक रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पे आंसर ये हो सकता है ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव बोथ द एक्टिविटीज।
ओके, आई लव बोथ दी एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ पे फिर आई लव बोथ दी एक्टिविटीज, द रीडिंग एंड द राइटिंग, साथ में रिपीट नहीं करना, वरना क्या क्वेश्चंस का पैराफ्रेज नहीं हो पाया और लाइक रिपीटेशन ऑफ वोकैब हो जाएगा. सो द आंसर वुड बी आई लव, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई लव बोथ द एक्टिविटीज. I am passionate towards reading a majority of books based on information technology, innovation, and my favorite topic is cybercrime, because of many people are being attacked with fraudulent activities, and due to that, how I can save myself as well as others. I mostly prefer, or I'm curious, or I'm interested toward reading books and articles based on a cybercrime. Moreover, in terms of writing, while I'm like a student of a bachelor in computer application in third year, and because of that, I have to focus on writing a number of assignments and projects, and because of that, writing is one of my passion as well. तो आप ऐसे जो भी है आंसर यहाँ पे दे सकते हो. द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन और रिस्पॉन्स आई वुड से दैट इज द हाइपोथेटिकल, और आई वुड से द फ्यूचर विजन. यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि एज ऑफ नाउ एंड पास्ट, आपका जो कंपैरिजन था थोड़ा बहुत कर लेके, पास्ट में आपने ये किया, अभी आप ये, अभी एग्जामिनर आपको स्ट्रेट अवे पूछेगा डायरेक्टली, वुड यू लाइक टू डू समथिंग in a future? Okay, would you like to enjoy something? Would you choose something? Like if you get an opportunity, would you like to travel in a future space? और ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ पूछे जाएंगे. तो देखते हैं सैंपल के साथ. लाइक फर्स्ट इज लाइक, वुड यू लाइक टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वुड यू लाइक टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो आप ऐसे जो क्वेश्चन है उसे क्या किए, पहले पर्सनली आपकी जो स्किल है, लाइक लैंग्वेज है, तो अभी आपको कितनी आती है और आप कौन सी सीखना चाहते हैं और क्यों सीखना चाहते हैं, और अगर सीख गए तो क्या बेनिफिट होगा, बस उतना ही आपको डिस्क्रिप्शन दिखाना है, और यू हैव टू स्पीक इन दैट टोन. लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइक, वुड यू लाइक टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, सर्टेनली, ऑफ कोर्स. आप जब भी किसी आंसर का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो, यस, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, ऐसे आंसर मत दीजिए. एग्जामिनर को क्या होता है, वैसे लाइक आप बोलते हैं, yes, I would love to learn a new language, which is none other than German, because when I will move to Germany for my higher education, it will help me to not only understand the lecture, but also help me to communicate with the local people, and communication in local people is necessary to get a part-time job. ऐसे आंसर होगा एग्जामिनर को, they will feel to slap you on your face. So I'm sorry to being aggressive, but point is that हम always we are fighting और we are complaining के एग्जामिनर स्कोर नहीं दे रहा, स्कोर नहीं दे रहा. तो आपको क्या है कि आपके जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे दिखाना है, तो उसकी वजह से आपको एग्जामिनर को फील होगा कि that you are speaking genuinely, you are like you are explaining your own ideas, your own emotions. तो ऐसे बोलिए. Okay, like would you love to learn a new language? Of course. Presently I know three languages. The first one is Gujarati, which is my native language. The second one is the national language of India, which is none other than the Hindi, and the third language, which is international English language. Additionally, I would love to German, because I'm planning to get a higher education in Germany, and to settle down properly in Germany. The language is going to help me not only in understanding my lecture, but also it is going to help me to have a conversation with local people. And additionally, I heard that while having a part-time job, as it is necessary for each and every student to for their survival, and to have a part-time job, mostly employer are looking employ person or applicants who is having a fluency in a local language. तो आप ऐसे आंसर आते हैं ना कि ऐसे मत बोलिए. आई वुड से एक्सप्रेशन इज नेसेसरी, तो आपका स्कोर जो है आई वुड से अब अच्छा ही रहेगा. लेट्स से फॉर अनदर एग्जांपल, डू यू वांट टू गो अब्रॉड. तो ये जो क्वेश्चन है आपकी विश पूछी जा रही है, दैट योर डिजायर. ओके, तो डिजायर है, डू यू वांट टू गो टू अब्रॉड, और डू यू लाइक टू सेटल डाउन इन अब्रॉड, यू लाइक टू गो इन अब्रॉड. तो क्यों, यस अगर है तो क्यों, कैसे, कहां, और अगर नो है तो क्यों, कैसे, कहां. ओके, सो आंसर वुड बी certainly, of course, obviously, since I have completed my high school education
क्योंकि मेरी पैशन है, मेरा लाइक काइंड ऑफ डिजायर है। जब मैंने 12वीं खत्म की तब से मैं लाइक सपने देख रहा हूँ, मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, तो आप ऐसे बोलिए। Since I have completed my high school education from one of the reputed school called PP Savani, and since then I'm dreaming to move to USA for my higher education in the Master of Computer Applications, because US is having अब डाल दीजिए because US is having ample amount of opportunity. First, student will have higher education, most global and in-demanded education or most innovative education, and additionally can have a better opportunity to settle down over there with your friends and family. तो क्या है आपकी विश, वो आप डाल दीजिए। अगर नेगेटिव जाना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट, तो फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन दिखाइए। ओके, लाइक वुड यू लाइक टू गो टू अब्रॉड? Honestly speaking, not. Recently, I finished my bachelor in computer application, and I received a job in one of the reputed company called ABC Corporation, which is located in Surat. I got appointed as a senior software engineer, and my whole family, my friends, and social circle are living in India. And because of that reason, I do not personally, I do not wish to migrate to another nation, because I will be missing my family and friends a lot. I would not love to live lonely over there. So ऐसे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन when you are speaking, I highly recommend it. Hand movement, facial expressions is necessary. The last but not the least, the number 5, it is a balanced perspective. I would say the balanced point of view. आपको यहाँ पे अभी क्या है कि दो ऑप्शन पूछे जाएंगे या फिर डू यू टाइप के क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, तो यही इसका रिस्पॉन्स आप बैलेंस में भी दे सकते हो। लाइक डू यू लव ए और बी, तो आप जा सकते हो ए एज वेल बी, दोनों पसंद है। इन सम केसेस ए, इन सम केसेस बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी, और आइदर ए और बी। नाइदर नॉर यूज कर सकते हो, आइदर और यूज कर सकते हो, नन ऑफ देम यूज कर सकते हो, कुछ भी। लाइक आई प्रीफर नन ऑफ देम, नॉट इवन ए, नॉट इवन बी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ समझ। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्रीफर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग और विंडो शॉपिंग? ओके, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या ऑफलाइन शॉपिंग, डोर टू डोर शॉपिंग, विंडो शॉपिंग पसंद है, कौन सा लाइक प्रीफर करोगे? तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि दोनों ले रहे हो, आप अगर दोनों पसंद कर रहे हो, तो इट वुड बी अ बैलेंस रिस्पॉन्स। ओके, आपको जो आंसर देना है बैलेंस देना है, कि ये भी और वो भी। तो वेल इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, वेल इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। आप जब शुरू कर रहे हो तो लाइक ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन, कहाँ पे, इट इज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, सो यू कैन स्टार्ट इन दैट वे। वेल इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और इट डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन। सिचुएशन और कंडीशन से शुरू करिए। Mostly when I want to shop for electronic gadgets such as mobile phone, my headphones, digital wristwatch, as well as some spare parts like gadgets, spare parts like RAM, hard drive or storage devices for my laptop, I mostly prefer online shopping because क्या खरीद रहे हो अभी, because से शुरू कीजिए। Because while online shopping, I do not require to waste time while moving from one location to another location. Additionally, online shopping provides a lot of codes and coupon and discount offers through which I can have a huge, or I can save my hard-earned money. Online क्या हो गया? While on the other hand, when I want to purchase my costume, clothes, shoes, I mostly prefer offline shopping. तो अभी देखा है क्लोथ्स एंड शूज के लिए क्यों ऑफलाइन? Because while selecting clothes and shoes, it is a messy or it is a confusing task for me. I need to try. I always prefer to try, check the material as well as quality before I purchase. And on online platform, it is not possible. तो आप ऐसे बैलेंस व्यू में जा सकते हो। Okay, let's take the another example. Do you like to celebrate festivals? अभी तो यहाँ पे से like, do you love to celebrate festivals or not? State question है, इसका भी आप बैलेंस डाल सकते हो। लाइक डू यू लव टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, तो इसका जो आंसर हो सकता है, ना तो कोई नहीं बोलेगा, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, सर्टेनली, ओ यस। आप जब आंसर बोल रहे हो तो लाइक यस, नॉट दैट वे। ओके, डू यू लव टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? यस, आई लव टू सेलिब्रेट ऑल काइंड ऑफ फेस्टिवल्स। अभी फेस्टिवल्स के कितने प्रकार है, व्हाट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स, लाइक वी हैव अ नेशनल फेस्टिवल्स,
we have religious festivals and we have international festivals. तो शुरू कर दिया, अगर आपको तीनों के नाम याद है तो ऐसे लाइक certainly I love to celebrate three of the festivals or three of the major kind of festivals. The first one, national festivals. The second one is regional festivals, religious festivals, as well as the local festivals. तो आप ऐसे लाइक और I would love to celebrate all the festivals, and among them my favorite one is one of the most favorite is Diwali, which is called the festival of lights. यहाँ पे याद रखिए, आप खास ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई ट्रेडिशनल वर्ड बोलते हो, लोकल वर्ड लाइक फेस्टिवल्स के नाम जो इंडिया में है तो मोस्टली लाइक ट्रेडिशनल नाम नहीं होंगे, तो इमीडिएट आपको उसका क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, एक्सप्लेनेशन देना है, एक्यूरेट ना हो तो चलेगा, लेकिन you have to describe that word in English, like Holi, a festival of color, Navratri, a festival of 9 nights, or traditional festival of folk dance. आप कैसे भी बोल सकते हो, ओके तो उसका आप इंग्लिश वर्जन, आई वुड से इंग्लिश थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी. तो आंसर ऐसे हो सकता है लाइक क्वेश्चन जो था हमारा, डू यू लाइक सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? ऑफ कोर्स I love to celebrate, I love to enjoy each and every festivals in India. Among them, mostly I love to celebrate two festivals. The first one is the festival of Deepavali, which is called the festival of lights. During the festival, अब आप personal कर सकते हो यहाँ पे या फिर people like general डाल सकते हो. Like during the festival, people buy or purchase new clothes and gifts for their friends and family. And during the evening, each and every people share the gift card and sweets with each and everyone. And mostly children while evening they fire crackers in open ground. Another festival which I love is a kite flying day. During the day I wake up early in the morning and rush towards my terrace, and throughout the whole day I keep flying my kites and enjoy a lot. तो आप एक दीजिए या फिर दो फेस्टिवल दीजिए, दैट वुड बी इनफ. आप एक डालिए तो भी, वरना क्या आई वुड से थोड़ी लेंथ ज्यादा हो जाएगी. तो लाइक ऑफ कोर्स आंसर ऐसे हो सकता है, ऑफ कोर्स I would love to enjoy each and every festivals of India, and among them my most favorite, one of the most favorite festival is Deepavali, which is called the festival of light. During the festival I wake up early in the morning and I go with my parents to purchase sweets, new clothes, as well as gift for my friends and family members. During the evening, we exchange the gifts and sweets with each and everyone, and in the evening, I fire crackers in open ground, which is located stone throw away from my house. Stone throw away means के एकदम नजदीक होना. ऐसे आप idiomatic language भी use कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस और आई वुड से द रिस्पांस. आप ऐसे प्रिपेयर करिए कि आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझिए क्या है, उसे आप किस तरीके से रिस्पांस दे सकते हो. ये वीडियो 2-3 बार देखिए. आई वुड से थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन दैट विल हेल्प यू मोस्ट. गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ऐसे रिस्पांस दोगे एग्जामिनर को, ही विल बी प्रेज्ड, ही विल बी हैप्पी एंड विल हेल्प यू टू गेट अ गुड स्कोर. ऐसे प्रिपरेशन कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल के साथ. ऐसे ही मजेदार तो नहीं कहूंगा, बोरिंग ही है, क्योंकि लर्निंग इज ऑलवेज कंसिडर एज अ बोरिंग. वी डोंट कंसिडर लर्निंग एज अ फन. तो मजेदार तो नहीं है, लेकिन आई वुड से द लर्निंग एंड मोस्ट एक्यूरेट टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर आइल्स प्रिपरेशन एंड टू गेट अ गुड बैंड स्कोर, हाई बैंड स्कोर, अ परफेक्ट 8, 8.5 or even a 9 band in your first attempt of your IELTS. So thank you so much for being with me, being with us, and thank you so much for watching this video. Stay tuned, बने रहिए अगले एक मास्टर स्ट्रोक वीडियो के साथ.